Ladies and gentlemen, as we begin this proud celebration, we are honored to welcome our esteemed chief guest. As we respectfully invite our honorable chief guest along with our respected principal sir, manager sir and all committee members for the flag hosting ceremony. May I request everyone present here to please rise and stand in attention as the tricolor is with it. सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, हैंड्स डाउन। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के। Every year on 15th of August we celebrate Independence Day, and under this tribe flag we pledge for the betterment of our country, for the betterment of our future generation. I have no doubt that our future generation, every time I came here, I have seen happy faces, encouraging faces, and
really free? What makes you free? What makes you the feeling that you are free? You must be given some rights. Those rights are preserved in the constitution. But this independence, this freedom will not last long if all of us, we have to give our soul-hearted dedication to this country. Like the ancestors, like the forefathers who have sacrificed their life for the independence, they could not enjoy their freedom. But the reason was so clear, our next generation should enjoy the freedom. They should not feel the hardship, they should not feel the hardship that they have felt from the Britishers, from the Mughals. But in a true manner, you are served this freedom for their dedication, but it is our sole responsibility. Now it becomes very important what we are giving to our next generation. May not be, we would have to go to that level of sacrifice, that level of beyond imagination compromises what our forefathers have given for the freedom. But the sacrifices that we have to make, the changes, the meaning of the sacrifices changes according to the time. So we have to maintain the freedom, we have to give our next generation the freedom we are enjoying. In fact, we would give them more freedom to fly in the sky, we would give them more freedom to achieve all their potential. We would give more freedom to take our nation to the another level or different level where the world will recognize us in a greater way. Okay? So all of you must know, or if some of you do not know, what is the theme of this 80th Independence Day. So we are looking for 2047. So what year this is? What year this year? Which is the year? 2026. We are celebrating 80th Independence Day. Means we have spent 80 years since we have got independence. But to make this independence more fruitful, more meaningful, we have set a target 2047. The theme of the 80th Independence Day is Viksit Bharat, Yuva Bharat. Okay, there is a term Yuva Bharat. Yuva Bharat means all the youth. You are the future policy maker. You are the next generation who will make the policies for the forthcoming generation. Which generation you are? Recently it has been in talk. Which generation you are? Yes, you are very proud to say yourself as Gen Z. And there are some Gen Alpha also. So we are seeing, we are millennial and we are getting our seniors, but now we have a combination of 4 generations. Okay? But only being a generation giving fascinating names doesn't make you great for the nation. You have to mean what privilege you have been getting. Okay? So Viksit Bharat, Yuva Bharat means the Yuva has to lead the Bharat. The future Bharat depends on your hand. The Viksit Bharat depends on your hand. 2047 we are target. We will be the superpower in the country, in the world. So for that, I would say today 3 things, 3E you have to take care. Education, environment, and employment. So we are not feeling that pain what our ancestors have gone, they had gone through. But we have to focus on our education. And education starts from the village, start from the home, start from the parents. Then you come for formal education in the school. But now you must be that much educated in a true manner that you can educate your next generation. You can take the next generation into the light. Education is the path where someone is taken from the darkness to the light. So you have to be the torch bearer. You have to be the guiding light for your next generation, where you can lead the students, lead the children, lead the future generation from the darkness to the light. Next, I would say you have to take care of the environment. You have to take care of the environment in any possible way. So it is not like only plantation makes a good environment. So if you contribute in a smaller way, if you just take care of the small wrappers, if you just throw it, pick it in dustbin, if you recycle the small wrappers, small bottles, if you don't use the polythene, if you are going to the market with your parents, with your father, if he takes a polythene and bringing goods to your home, instead of that polythene, if you carry a bag, cotton bag from your house, that also contribution to the environment. So
taking care of the environment is a cumulative tax. It is a combined effort of all generation, all the people. And you can be that or be that, you can contribute. Don't think you are a small boy or a small girl, you can contribute. By any means, you can contribute starting from a small effort. Understood? And next is your employment. When employment comes, the economy drives, economic growth. Okay, so in our country, this is a rising concern that due to employment, so many students are protesting against the government in different areas. This means you are outed. But before going to any protest, before going for any government, so you have to make yourself that much able that you are ready to get that employment. Okay, and it is not the matter of only India, it is the matter of whole world. The world is going through war crisis, economical crisis, so many factors are there. So not only you have to look for the employment, you have to develop that entrepreneurship inside you. You have to be the businessman. You have to give employment to others. Instead of looking for employment, working for others, you make yourself that much capable, you make yourself that much able that you can offer employment for so many others. So instincts are inside you. So many startups are coming. You have so many innovative ideas. You can start working on those innovative ideas and you can be the entrepreneur of the next generation. So don't always look for the employment. So always try to target, you will be the employer and so many people will get employment under you. So I won't take much time. I would sincerely thank all the teachers for their effort and most importantly all you students, beloved students, despite of this hard weather, uncomfortable weather, our preparations were 100% good and the nature also supported us. Somehow we have managed to complete. Gathered here to celebrate the will of 80th Independence Day. But have you ever thought how many people sacrifice their happiness, their dreams, and even their life for the freedom that we enjoy today? Freedom was not given us as a gift. It was the result of sacrifices and struggle of countless freedom fighters. On 15 August 1947, our nation broke the chain of British colonial rule. But that freedom did not come wrapped with celebration alone. It was written with sacrifice and struggle and fear of countless freedom fighters that never leave. Thousands of young men and women gave up their everything they had. मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान तवील गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक दास्तान है, कुर्बानियों की, वफाओं की और हौसलों की। आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, जहां बोलने, सोचने, लिखने और जीने की आज़ादी हमें हासिल है, ये आज़ादी हमें यूं ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सदियों की कुर्बानियाँ, जिद्दोजहद, ईसार और शहादतों की एक तवील दास्तान छुपी हुई है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे यारों संभाल के। 15 अगस्त का दिन हमें न सिर्फ खुशी देता है, बल्कि हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद दिलाने और मौजूदा नस्ल को अपनी जिम्मेदारियां समझाने का मौका भी फराहम करता है। आज हम उन तमाम शहीदों को याद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया था। हमारी आज़ादी की जिद्दोजहद कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी तहरीक थी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर हिस्सा लिया। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की सिर्फ इसलिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले सके। उस वक्त यह जहदी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन आज मैं आप सबसे निहायत अहम सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हमारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई? हरगिज़ नहीं। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखना, उसकी हिफाजत करना और उसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज़ादी फ़कत जश्न मनाने का नाम नहीं, ये कुर्बानी
कुर्बानियों तो वादियों का निभाने का नाम है। तो हमें सिर्फ खुशी मनाने के बजाय ये अहद भी कर लेना चाहिए कि हमें तालीम आम करनी है, आपसी नफरतों को मिटाना है, मजहबी रवैयों को फरोग देना है, करप्शन, झूठ, नाइंसाफी और नाइतफाकी से लड़ना है, देश को तरक्की की बुलंदी पर ले जाने में हिस्सेदार बनना है। आज अगर हम वाकई उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हमें उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना होगा, ऐसा हिंदुस्तान जहाँ हर शख्स बराबर हो, जहाँ हर मजहब को इज्जत हासिल हो, जहाँ नफरत की जगह मोहब्बत हो, जहाँ औरतें महफूज हो और जहाँ इंसाफ सबके लिए यकसा हो। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम इस आज़ादी को कभी बनने नहीं देंगे। हम फिरका परस्ती, तअस्सुब और करप्शन को जड़ से खत्म करेंगे और अपने बाद वालों के लिए एक रोशन, मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा, पक्का और मुखलिस खादिम कौम मिल्लत बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड। ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ନୀଳ ସାଗର, ଏଇ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ନୀଳ ସାଗର, ଅଲଗା ଲାଗେ ସବୁଠୁ କାହିଁ, ଅଲଗା ଲାଗେ ସବୁଠୁ କାହିଁ, ତା ଭୂଇଁ ତା ବଣ ପାହାଡ଼, ତା ଭୂଇଁ ତା ବଣ ପାହାଡ଼, ତା ଭୂଇଁ ତା ବଣ ପାହାଡ଼, ମାଟିରେ ତାର ପଦୁମ ଫୁଟେ, କଇଁ ତା ଅଭିମାନୀ, ଚାନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ହସୁଥାଏ ସେ, ଉଜାଗରେ ଜାମିନୀ, ଏଇ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରରେ ସିନା ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳେ, ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତେ ମାଟି ତାର ପାଦକୁ ଧୁଏ, ନୀତି ତାର ଏଇ ଦେଶର ନୀଳ ସାଗର, ଏଇ ଦେଶର ନୀଳ ସାଗର, ଏଇ ଦେଶର ନୀଳ ସାଗର। हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को झूमे तिरंगा, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माहें चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माहें चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा, माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना, ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माएँ चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। थैंक यू। हर कतरा वतन के नाम लिख देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी बलिदान लिख देंगे, ये तिरंगा यूं ही नहीं लहरा
बलिदान लिख देंगे। सुप्रभात आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य अतिथि, श्रद्धेय गुरुजनों एवं मेरे राष्ट्रीय प्रेमी साथियों, आप सभी को मेरा सदर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ भारत के इतिहास के एक ऐसे स्वामीर दिवस का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और आत्म संकल्प को अमर बना दिया। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतनाओं का पवन उत्सव है। आज का दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राण की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार प्रदान किया। लहू से सींच कर जिसने चमन आबाद कर डाला, लहू से सींच कर जिसने चमन आबाद कर डाला, उसी ने आने वाली पीढ़ियों का हर सपना संभाला। जो मिट जाए वतन की आन में मुस्कुराते हुए इतिहास ने उन्हें अमर सम्मान से नवाजा। प्रिय साथियों, सदियों की प्राचीनता ने भारत की आत्मा को एकता में जकड़ कर रखा है, उसे एकता के शुद्ध में पिरो कर रखा है। असंख्य वीरों के अथक संघर्ष, त्याग और साहस का परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ये स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति या वर्ग की अमूल धरोहर नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र का गौरवशाली परिणाम है। आज का दिन हमें ये स्मरण करता है कि स्वतंत्रता केवल आजादी प्राप्त करने का दिवस नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित और सार्थक बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की समृद्धि, हमारे राष्ट्र संस्कृति और हमारे संविधान का धरोहर भी है। प्रिय साथियों, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक स्थिति उसकी संप्रदा में नहीं, बल्कि उसके नागरिकता, उसके शिक्षित और उसके चरित्रवान नागरिकों में निहित होती है। अगर आज हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, सत्य निष्ठा को अपनाएं, तो हमारा देश निमंत्रण वर्ग में से उत्तीर्ण पद पर रहेगा। प्रिय साथियों, आज के इस पावन और शुभ अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम न केवल अधिकार मांगने वाले नागरिक बनेंगे, बल्कि अधिकार निभाने वाले भारतीय भी बनेंगे और अपने देश पर आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का डट कर सामना करेंगे। अपने देश की एकता और अखंडता को सदैव बनाए रखेंगे। राष्ट्र की गरिमा से बढ़कर कोई सम्मान नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कोई महान अभियान नहीं। जो वतन की आन में मिट जाए, वही स्वतंत्रता का सत्य मूल चुकाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Esteemed teachers, dear parents, and my lovely students, good morning to one and all present here. As we come to the end of the memorable celebration of our 80th Independence Day, I stand here with heart full of gratitude. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to our esteemed guests for taking time out of your busy schedule to inspire us with your wise words. As Mahatma Gandhi once said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Sir, your presence today has indeed motivated us to serve our nation with dedication. A special gratitude to our principal sir for his unwavering support and leadership. Your vision aligns with Dr. APJ Abdul Kalam's words, dream transformed into thought, result in action. I would also like to express my sincere appreciation to all the teachers, staffs for their tireless efforts in the making of this event a beautiful success. Your hard work reminds us the words of Swami Vivekananda, arise, awake and stop not until the goal is achieved. To our dear students, your energy and enthusiasm today have truly lighted up this event. You are the future of this nation. I would also like to express my gratitude to the supporting staff for their efforts behind the scene, ensuring the smooth execution of this event. Your hard work is paid off. It is deeply appreciated. Last but not the least, I thank all the parents for your continuous support
and encouragement to make this event possible. Your role is nurturing young ones is invaluable. As we conclude today's celebration, let us remember that independence is not just a right but a responsibility. Let us all pledge to contribute to the growth and prosperity of our nation, upholding the values of freedom, unity and peace. Thank you all for being a part of this special occasion. Jai Hind and happy independence to all of you.